Hi guys, my name is Hamza. I'm a 5th year medical student currently studying in China. Making a video like this is not my domain, but being a part of an international student community, I consider itself my duty to at least be a voice of international students who are stuck in Ukraine. So in this video, I'll be showing you what are the situations which international students are facing in Ukraine, especially being Pakistani and Indian students, and how their embassies have left them helpless in this बैड सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खारकिब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। 4th ईयर में मैं स्टडी कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो फिलहाल सिचुएशन बनी पड़ी है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। तो हमें एम्बेसी की तरफ से कोई एवैक्यूएट नहीं किया गया। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएँ। हम सारे स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट कोई $3000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, की सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। बच्चे अपने पैसे सारे ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। एम्बेसी की तरफ से सारा झूठ बोला जा रहा है। अब एम्बेसडर वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से एवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये देखे स्टूडेंट ये दिखाएं, ये सारे पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट देखा, ये भी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। ये मैं डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। पाकिस्तान एम्बेसी ने हमारा कुछ भी नहीं किया, बस हमसे झूठे वादे किए हैं। कभी हमें कहते हैं कि आपको ले जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं ले जाएंगे। 2 दिन हो गए हैं पाकिस्तान एम्बेसी से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम सुबह से यहाँ भूखे बैठे हैं, ना पानी है ना खाना है। बाहर बॉम्बिंग हो रही है, ना हम अपने हॉस्टल में वापस जा सकते हैं। हमारे बैग वगैरह सारे पैक पड़े हुए हैं। हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स बस हम उठा के कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी ने इतना भी नहीं किया कि हम एक दफ़ा फ़ोन करके पूछ लें कि आपके हालात किस तरह के हैं। गूगल वगैरह पे देखें या जियो न्यूज़ वगैरह पे देखें तो पाकिस्तान एम्बेसडर झूठी खबरें फैला रहे हैं कि हमने एवैक्यूएट कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बच्चा एवैक्यूएट नहीं हुआ। सारे के सारे खारकों में बैठे हुए हैं। मेरी बस पाकिस्तान एम्बेसडर से यही दरख्वास्त है कि जितना जल्द हो सके हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी एक तरीके से, चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बार के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का, चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी रहे। शेख है, मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। हम रह रहे हैं टर्नोपिल में। हमारा एड्रेस है चेकिवस्कोहो 39 चेकिवस्कोहो 39, फ्लैट नंबर 57, टर्नोपिल्स का ओब्लास्ट 46002। हम सारे सिचुएशन से हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को, दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी 2 रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है, जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है। प्लीज आप लोग हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता है, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं
और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें, प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती। So this, is the situation in Ukraine right now. The embassies, either they don't respond, or if they respond, there are these kind of statements coming out, the embassy officials saying, we ourselves are stuck in this situation, how can we help the students? So this is nowhere a proper official reply. This will create a panic in students' mind, and this is not how you deal with this kind of situation. You know what embassies are doing? The embassies are telling the students to come to places which are far away from the capital or far away from the border. For example, they are calling the students to Ternopil, and Ternopil is, Ukraine is so big, Ternopil is so far from many students' place, because these students are in stuck in different cities, and until these embassies, like from places, they don't rescue the people from there, it's impossible for them to go from one place to another place. They are telling the students to go to Ternopil, towards the western part of Ukraine, and this is so difficult, because at this time buses, metro stations, everything is closed, everything is filled up, and you can't find tickets at this time. The students, they are going towards the metro stations. The students who are staying outside their hostels, they are reaching the metro stations. There are Pakistani, Indian, different nationality students are residing in the metro stations. The thing about metro is they aren't getting any tickets, so how would they travel from capital like Kiev or other cities to Ternopil so far? It's practically impossible right now. There is martial law, there are sirens everywhere. These students who are living wherever they are, there is no cash in ATM. There is grocery and these fruits, everything, is very less. Now if we talk about, like, if the students are in any city, what is the situation over there? There are bomb blasts. In Kyiv, officially there are 2 bomb blasts, but the students over there, they say, like, until yesterday there were 8 bomb blasts in Kyiv, and we don't know until how much time this situation will continue, of different countries. So what is the measure of different governments? What will they do? How will they rescue their students? This is a big question. And what is happening? The local people, they are also traveling towards the safest zone. Like, they are also traveling from big cities to Ternopil and towards the western side of Ukraine. So there is so much traffic and everything on the roads. The students who were doing part-time jobs, like many students had their own maybe taxis. So those students are traveling from one part to another by taking their friends, and but how many people would they take? At least 4 or 5 in one car, or 6 or 7, not more than that. So students are helping themselves. There is no intervention of the embassy or governments inside this. So we need a solution for this. It doesn't work like that. And when we talk about the flight tickets, they are also so expensive. Even right now, they are so the flight tickets are so expensive. The embassies and the governments are involved. So this should be cheaper, not expensive. Why is it happening that at this disaster stage also, the governments are not helping their students, and the people who can't afford, what will they do? They will stay over there, sacrifice their life. This is how it's gonna work. So we need a immediate action on it. Somehow we need to rescue our students, international students, from this place. The people who lived or who were outside universities, they are rushing towards metro stations. They have no help from their school or the embassy. The students who are in school, they are sleeping in grounds, and even at this time the university officials are charging them for blankets and other stuff, because Ukrainian weather, is very cold. The people who reached Ternopil, they are living underground. Like, every building has an underground place. So students and even other local Ukrainian people stay there. The main question is, this situation is going on since 2 months. The students were in touch with the embassy. Why didn't they rescue the students earlier? The embassy should have helped these students. On the contrary, the flight tickets were so high from the last 2 months that these students weren't able to leave Ukraine. This was the current situation I highlighted. For you people, if you can't physically help these people, try to spread the word out. Try to spread videos like this.
which are telling about this international students issue. And you know, there are other communities also, but at least whatever you can do, just do it. Share these kind of videos on different platforms, so at least there is a pressure on the officials, on the government officials, and they do something about this. And do pray for Ukraine. With this, I'll take your leave with the hope that something good will happen with international students in Ukraine and the Ukraine itself. I'll take your leave.